Welcome to the video presentation on Work Effectively with Others, Part 1. Greetings. My name is Sudeep Malhotra. I am a professional behavioral trainer. Friends, now I will tell you how a person will think and how it will reflect on his behavior. Thinking of person may be positive or negative, and that person may be lineman, customer help desk executive, senior officer, or the customer himself. But in all conditions, you have to make your behavior positive. Let us now see how positive thinking and negative thinking will reflect on a lineman's work. अरे गिरिराज लाइनमैन, तो अपने हेल्पर को लेके वहाँ बेगमपुर में तार टूटा हुआ है, उसको लेके जरा फटाफट वहाँ पे चले जाओ, कुछ सामान भी लेते जाना, वहाँ देख लो थोड़ा वहाँ परेशानी है, जाके जरा थोड़ा जल्दी करा के उसको। अरे साहब मुझे बोलते हो बार बार, मैं तो नहीं जाता, किसी और को भेज दो, मेरी पटरी ना खाए। कोई बात नहीं है, वहाँ पे परेशानी बहुत ज्यादा है, थोड़ा चले जाओ, उसकी हेल्प हो जाएगी, वो अकेला फंसा हुआ है वहाँ पे। साहब मैं तो जा ना पाऊँ, किसी और को बोल दो, मेरी उससे पटरी ना खाएगी। भैया वहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है, तुम जाके वहाँ पे जरा उससे उसकी हेल्प कराओ। आपको मैं क्यों जाऊँ? मैंने बोल दिया आपको, मैं नहीं जा रहा। भाई वहाँ पे बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, वहाँ पे मुझे नहीं आना, कोई जाओ जाओ, किसी और को बोलो। Friends, you have seen an example of lineman's negative thinking and how it is reflected in his behavior at workplace. Let us now see how a positive thinking of linemen will change the workplace situations. अरे गिरिराज लाइनमैन, वो वहाँ पे राजू लाइनमैन फंसा हुआ है, बेगमपुर में एक एसटी का तार टूटा पड़ा हुआ है, उसको जरा जाके उसकी हेल्प करा दो। सर मैं कंप्लेंट से आया था, खाना खाने की सोच रहा था, पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी जाता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ। सर क्या जरूरत है वहाँ का, कोई सामान की जरूरत है? कोई बात नहीं, तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद चले जाओ। नहीं सर, मैं पहले उसकी हेल्प कर देता हूँ। कंडक्टर ले जाओ सर, कंडक्टर टूटा दो। कप्तान कंडक्टर ले ले और चले आप दोनों साथ में जल्दी, फिर बाद में साथ खाना खाएंगे। चलो ठीक है, देख लो जैसे हो। By thinking positively, person's behavior change. He looks for solutions, not for excuses. A lineman can solve complicated issues easily if he has a positive attitude. Now, let us know about the ethics at workplace with the help of an example. Here is one customer who lodged a complaint for electricity problem. The lineman has come for rectification of complaint. Here, lineman is talking to the customer after finishing the line repair work. Let us see what will happen. ठीक है, मैंने देखा बहुत अच्छा काम करा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सर देख लीजिए, मैंने बढ़िया काम करा है, तार काफ़ी जल गई थी और काफ़ी कंप्लेंट छोड़ के आया हूँ मैं, काफ़ी दूर से मैं समझ सकता हूँ, और आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और काम मैंने चेक कर लिया है, कंप्लेंट मेरी ऑफिशियली रिकॉर्ड है वहाँ पे, और आप बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। सर फिर भी बात देख लीजिए, मैंने बढ़िया काम करा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नहीं ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, जब जरूरत पड़ेगी आई विल कॉल यू, अदरवाइज आप जा सकते हो। धन्यवाद सर, फिर देख लेना, फिर दोबारा कभी हमारे को जरूरत पड़े तो देख लेना सर, फिर हम निकलते हैं, फिर क्या करें। हाँ ठीक है, आप चाहिए। The way lineman behaved is not permissible. His intentions and body language was that he was expecting some favor from the customer. This is not the correct way of behaving with the customer. Let us now see the correct way of behaving with the customer. सर नमस्कार, आपकी लाइन चेक कर दिया, आप चेक कर लीजिए प्लीज। थैंक यू राजू, आप आए थे, आपने लाइनमैन का बहुत अच्छा काम करा है और मैं बहुत खुश हूँ। बताओ क्या सेवा करूँ? अरे नहीं सर, हमारा तो ड्यूटी आपकी सेवा करने का, कोई भी आपसे कोई हमारे को सेवा हो, आप 24 फोन कर सकते हैं। नहीं, आप हमेशा अच्छी सर्विस देते हो, आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, फिर भी जो मेरे नहीं सर, चाय पानी के लिए नहीं सर, हमारी कंपनी नाम होना चाहिए, हम नहीं चाहते हमारी कंपनी बदनाम हो, और हम तो चाहते हैं हमारा हर आदमी अच्छा काम करे, हमें कंपनी तनख्वाह देती है और हमारा अच्छा। फिर भी कुछ मैं क्या? अरे नहीं सर, हमें अच्छा नहीं, हमें ये हमारा है और हमें आपसे पैसे भी देनी है, कोई शिकायत हो आप फ़ोन करिए और आप मुझे बुला सकते हो, हमारा ऑफिस से 24 सेवा आपके लिए तैयार है। चलो आप क्या? Friends, this is the right way of behaving with the consumer. Now that you have understood about ethics at workplace, next, let us know about grooming skills. Means that how one power sector worker should look or carry himself before going to office or consumer's premises. प्रवेश, ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने भाई? सर कह रहे हैं कंप्लेंट करके आ रहे थे।
नहीं, ये कंधे पे शर्ट है, तुम्हारे हाथों में ये अंगूठी चैन वगैरह क्यों भाई? ड्यूटी पे क्यों पहन के आते हो तुम लोग? इससे कंपनी की छवि पे क्या फर्क पड़ेगा? उस गर्मी पड़ती थी सर, गर्मी के चक्कर में शर्ट। भैया कस्टमर के घर पे आप जाते हो, उससे कस्टमर आपको देखता है, तो इससे बिजली बोर्ड की कंपनी पे आप देखो ना कितना गंदा प्रभाव पड़ेगा। सर कौन सा कोई बुरा हाल है क्या? बुरा हाल है सर, कोई गलत थोड़ी है, गर्मी पड़ रही थी डाल लिया सर। भैया आगे से ये सब चीजें जब आप ड्यूटी पे आओ तो ये शर्ट आपके पहने होनी चाहिए, और ये अंगूठी चैन वगैरह जो है ना, आप ये दोबारा ड्यूटी पे नहीं आना इस तरह से। ठीक है सर। अगर दोबारा इस ड्यूटी पे आओगे, समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर दोबारा से इस तरह से ड्यूटी पे आओगे तो आपको ड्यूटी पे नहीं ले जाएगा, भगा दूंगा। ठीक है। Friends, you have seen the improper manner of dressing at workplace. Let us see the proper and correct manner of dressing when working in power sector. You will find proper dressing sense of workers have a positive impact on the customers. कंप्लेंट करके आ रहा हो तो ये जैकेट वैकेट अभी तक पहने हुए हो? सर ये आपने ही तो बताया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। Friends, you have seen linemen wearing proper reflective jacket and dressed properly even after completion of work at customer's place and on the way back to office. Now, we will see proper dress of a lineman or power sector worker at workplace. Linemen must wear safety shoes properly. The lineman seen in video is wearing safety jacket and helmet even after completing his work. He is not wearing any metallic or gold ornaments. Also, he is wearing shirt in proper and presentable manner without buttons open. When you go to customer's place, you should go with proper dress. You should look presentable and be wearing a smile on your face. Now, let us know about conflict management. Friends, we are human beings. We have different perceptions, likes and dislikes. Sometimes such personal preferences results in some misunderstanding at workplace, among colleagues and co-workers. There will be differences in opinions which may result in misunderstandings. But when we are at workplace, we should avoid such misunderstandings and judging people on our parameters or perceptions. Now, let us see how misunderstandings will impact a worker or lineman at workplace. Let us see few situations occur at our workplace. राजू, ये कंप्लेंट आई है बेगमपुर की, आप इसे अटेंड कर लो। साहब को हेल्पर दे दो, कोई हेल्पर है ना, किसी को हेल्पर 2 मिनट। अच्छा ठीक है, मैं आपको एलएम दीपक है, उसको आप लेके जाओ। दीपक, आप आज राजू के साथ में हेल्प ही कर लो। साहब कोई और आदमी नहीं है इसमें, काम तो जल्दी कराता भी नहीं है, और मुझे ढंग का आदमी दे दो हेल्पर जिससे मैं काम करा सकूं। नहीं ठीक है, बट वो आपके साथ जाएगा क्योंकि आज आपके पास अपना हेल्पर नहीं है, तो आप इसको लेके तो सर कोई और भेज दो। सर काम तो करते नहीं है, इनके साथ पटरी वैसे भी ना है, तो सब दूसरा और हेल्पर को दूसरा भेज दो। ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप लोग देखो इकट्ठा काम करो, आप जाएं, आप उनको साथ लेके जाओ आज। ठीक है सर, जितना होता करके आते हैं, बाकी दूसरा हो जाता तो कर लेते हैं। ठीक है। Friends, now you have seen how conflict can happen between two linemen, and as a result, work will not be taken up properly, and unnecessary stress will build up between two. Because of these differences of opinion and views, a big mishap or accidents due to stress may also happen. When you are at workplace, you should not have misunderstandings and acceptability for others' thoughts and views. Let us look at an example of avoiding such misunderstandings among workers at workplace. हेलो राजू, सर एक काम करो, ये कंप्लेंट है बेगमपुर की, इसे अटेंड कर लो। ठीक है सर, कोई हेल्पर मिल जाएगा दे दो। अच्छा, आपका हेल्पर नहीं आज? नहीं सर, मेरा नहीं है। ठीक है, ये दीपक है, अच्छा लड़का है, आप दीपक को साथ ले जाओ। कोई बात नहीं सर, अच्छा बुला लो, मैं ले जाऊँगा। ठीक है दीपक, आप राजू के साथ में आज हेल्प भी करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। भाई दीपक, 10 कंप्लेंट है, बहुत जल्दी करके खत्म कर लेते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह काम करेंगे।
ठीक है मिस्त्री जी, मैं तो आपके पीछे पीछे रहूँगा, जैसे कहोगे वैसे ही काम करूँगा। कोई बात ना, मैं काम करूँगा, तू मेरी हेल्प करता रहियो, ठीक। जल्दी हो जाएगा काम जल्दी से, ठीक। बाकी मैं अपना संभाल लूँगा। ठीक। Friends, if there is no misunderstandings between two people, work will happen easily, properly and promptly. The work which takes more time to complete can happen in lesser time. Friends, as you are aware, electricity work is very risky. While working, we need to take all possible safety precautions as per guidelines. Precautions does not only mean the physical aspect, but mental ability also. If you do not have proper attitude, sometimes even precautions taken will not help. Careless attitude may result in accidents, which will end up in personal injury, fatal or non-fatal, or loss to the public life and property. Let us see the right and wrong attitude for a workman working in power sector. अरे ग्रीजाल लाइनमैन, वहाँ पे कंप्लेंट है फतेहपुर बेरी गांव में। अच्छा सर। वहाँ पे पोल बेस पार्किंग हो रही है, जरा जाके वहाँ पे कंप्लेंट अटेंड कराओ जरा। ठीक सर। सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक सर। कप्तान, हाँ जी। टूल ले लो और फतेहपुर डेयरी की कंप्लेंट है, चलो फटाफट। लाइनमैन जी, इसमें डिस्चार्ज रोड वगैरह लेना है क्या, रस्सा, सेफ्टी बेल्ट वगैरह, हेलमेट? अरे क्या करोगे, जल्दी से जल्दी चलो यार, फटाफट कर आएंगे। टूल वो ले लो, प्लास पेचकस। ठीक है सर, चलते हैं। चलो। Friends, you have seen how the negative attitude for safety measures of a lineman has put safety on the back. This may result in a major accident. Now let us see what should be the positive attitude towards safety. गिरिराज लाइनमैन जी सर। फतेहपुर बेरी में एक पोल बेस पार्किंग हो रही है, आप जरा वहाँ जाइए, कंप्लेंट पे जरा उसको अटेंड करिए। अच्छा उसमें सर। देखिए क्या प्रॉब्लम आ रखी है। ठीक सर। और अपना पूरा सेफ्टी का सामान साथ में लेके जाना। ठीक सर। कप्तान, हाँ जी। टूल और सेफ्टी का सामान हाँ जी। ले लो, फतेहपुर डेयरी की कंप्लेंट। लाइनमैन जी, वहाँ सेफ्टी के सामान की क्या जरूरत है, आप भी ऐसे ही टूल ले लेते हैं और टूल से हो जाएगा काम। वहाँ अपनी और जनता की सेफ्टी जरूरी है, इसलिए टूल और सेफ्टी ले लो। ठीक है, फिर ले लेते हैं। ठीक। Friends, you know that communication is a means of exchange of thoughts and ideas. There is a good way and a bad way of communication, and communication affects our daily work and daily life. Let us see an example of a good and a bad communication. अरे राजू, आज कुछ काम कराना था, तेरे को पता है कुछ? हाँ सर, बताओ, मेरे तो ध्यान नहीं है। एक केबल फॉल्ट है, उसकी एफएल से करा लेना तू। ये चाबी वाबी क्या ले रहा है कान में, इसको रख। ठीक है साहब, देख लूंगा, जांच चेक कर लेता हूँ। अरे तू किस लिए फोन में खेल रहा है? तेरे को सुनाई दे रहा? हाँ जी सर। मैं कुछ काम बता रहा हूँ तेरे को, तो जेब में डालना है, कभी हाथ कभी इसमें डालना है। सब बोलो तो सही, क्या? अरे कप्तान, तू सुन रहा है? तेरा ध्यान कहाँ है? तेरे बाल सही नहीं रहे अब तक, ये जो बालों में हाथ डाला जा रहा है। ठीक है साहब, देख लेंगे। तू वो रामेश्वर, तू अपना वो पेड़ कटवा लेना। ठीक है साहब। ठीक है? ठीक है। तू ऐसे कैसे खड़ा है? सीधा खड़ा हो, बहुत बत्ती से निकल रही है तेरी। अरे तेरे को वो काम बताता हूँ, पेड़ कटवा लेना तू जाके, फिर जेब में हाथ डालना तू। सर देख लेंगे, सर देख लेंगे, बता दीजिए। फोन निकाल लिया। ठीक है। अब तेरी जेब में क्या आ गया रामेश्वर? Friends, you have now seen a very bad scenario. I will now tell what will be its impact. Some words used by supervisor were not correct. Those words were not giving any message to the lineman, but it was going in a negative way. Not only the words, but the tone used was also wrong. He used very harsh tone. You could see the negative impact it had on the lineman. He was not listening to his team. Though linemen were not happy, they were still listening to the supervisor's words. By using such bad words and speaking rudely, message will not be conveyed properly. As you have seen, the body language of the supervisor was very negative. While speaking, he was showing his finger towards a person. You should never point at a person with finger. This is considered as a very poor body language. Never show anger on your face. And if you use harsh words, then the opposite person will not listen to you properly, even if you are in a supervisory position. Friends, let us now see what will be the impact if you speak properly. आज हमारे कंप्लेंट सेंटर पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक एलटी केबल फॉल्ट है हमारी,
कुछ हमें शटडाउन प्लान किया हुआ है, उस शटडाउन पे भी हमने काम करना है। और कुछ कंप्लेंट्स भी हमारी बढ़ी हुई हैं, उन कंप्लेंट्स को भी हमने मिलजुल के हैंडल करना है। तो आप सभी लोग अपना आपस में टीम वर्क ऐसा बांटें कि जिससे कि अपना हमारा काम भी सफ़र ना करे और हमारी कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो भी पेंडिंग ना रहे। ठीक है ना। तो जो आप लोगों का काम है, आप रामेश्वर जी आप FLC करा लेना, राजू आप पेड़ों की ट्रिमिंग वगैरह करा लेना, गिरिराज जी तुम जो है ना कप्तान के साथ मिलके अपनी कंप्लेंट से जो भी हमारी कंप्लेंट आई हुई है उनको थोड़ा देख के उनको अटेंड करा लेना और सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है सर। Friends, you've seen speaking properly will give you a positive thought. He is not proud. Linemen were listening to him with concentration. Linemen were understanding what a supervisor wants them to do. Linemen were nodding their heads to let the supervisor know what they have understood what he was saying. This happened because supervisor has used proper words, soft tone and good body language. We should always speak and project ourselves to family, colleagues and customers in positive manner. In this video presentation, you have understood about the skills required for work effectively with others.